are going to learn today three sign physical examinations to diagnose the patient is patient is suffering from the meningitis. Patient having the meningitis. This is a typical case of the meningitis, and at 3 days back, this patient came to the casualty with the complaint of high-grade fevers, vomiting, severe headache, photophobia, and one episode of seizure. This indicates that patient is suffering somehow there is the infection in the brain, and we can further assess on the basis of examination and physical examination. There is a 3 signs which indicate the patient is having the meningitis. Meningitis is the infection of meninges, and meninges is made up of 3 layers. First one is the pia mater, electron mater, and dura mater. This is the covering of the brain and the spinal cord. In this meningeal infections is considered as the meningitis, and we can assess that patient is having the meningitis. 3 sign is typical sign which having the specificity of 70 to 90%. And today we will learn how to assess these 3 signs. First one is the nuchal rigidity या तो knuckle rigidity. Second one is the Kerning sign. Third one is the Burzynski sign. And we will learn first the knuckle rigidity. If we try to bend the chin of the patient to the chest, it will rigid and it will not touch the chin to the chest, and patient will be irritable, and patient will having the pain in the neck, which indicates that there is a meningeal irritation, and patient becomes very irritable. If this sign found, this is known as the nuchal rigidity test positive. Second one is we can assess. Second one is the Kerning sign. In this case, we just flex the thigh and knee at 90 degree, and we will try to extend the knee. The patient will make a force to prevent the extension. Patient एक्सटेंड होने से रोकेगा. सेकेंड टाइम ये पेशेंट को मेनिंजियल इरिटेशन होगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा, अगर इसको हम सीधा करेंगे तो पेशेंट. और थर्ड वन इज दैट कि पेशेंट को बैक में पेन होगा, साथ में चेस्ट में भी, बैक चेस्ट में भी इसको पेन होगा. अगर ये होता है दैट इज द कर्निंग साइन पॉजिटिव. थर्ड वन है बुर्जिंस्की साइन. इस केस में क्या होता है, पेशेंट सुपाइन होता है, लाइट बेड में होता है. इन दैट केस if we'll try to bend the knee, and in that case patient will have the flexion of both the knee. अगर ये मिलता है तो ये क्या है, पेशेंट का बुर्जिंस्की साइन पॉजिटिव होता है. इन दिस केस पेशेंट automatically flex the both of the knee when we will try to bend the knee and try to touch the chin to that of the chest, and this साइन विल कंसिडर्ड एज बुर्जिंस्की साइन पॉजिटिव. अगर ये तीनों साइन मिल रहा है किसी पेशेंट में, along with is having the symptoms and complaint high grade fever, vomiting, photophobia, irritable in conditions, and then we can say that patient is having the meningitis. इसका स्पेसिफिसिटी 70 to 90%. एंड फर्दर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीटी स्कैन. सीटी ब्रेन कर सकते हैं, लंबर पंक्चर करके CSF फ्लूइड को निकालते हैं, उसको फिर हम लोग एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं. और फर्दर जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं. अकॉर्डिंग उनका पेशेंट अभी जो है, पेशेंट पहले से बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया है. एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेशेंट हैविंग ऑल द 3 साइन वाज पॉजिटिव, एंड टुडे इज द पार्टिसिपेटिंग ऑल द सिस्टर. फर्स्ट वन सिस्टर असीरा खान, सिस्टर निर्मला कुमारी, सिस्टर सुशांति कुमारी, सिस्टर रोशनी कश्यप. Thank you.